table. So here we specify the column names. Whenever we have a database, उसके अंदर हमारे पास we are talking about relational databases. हमारे पास different तरह के databases हो सकते हैं. We could have NoSQL databases as well, relational databases भी हो सकते हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं. तो relational database में there are tables जिसके अंदर columns होते हैं. So let's create some columns. Student ID जिसकी data type हम रखते हैं varchar. Student name varchar. Student age number, numeric value, student address. Right? So this is a database that we have created with a table. Student ID could also be declared as integer. Student ID को भी integer ले सकते हैं. It's up to you. Now let's create a primary key. हम primary key जो है, whenever we are working on relational databases, we should have a primary key for each relation or each table. हर table की एक primary key होनी चाहिए. So we can make the student ID as a primary key. Primary key बना देते हैं student ID को. Right students? इसको सेव करते हैं, इसका नाम रख देते हैं. Let's have the student table. The name of this relation, इस relation का नाम student रख देते हैं. Primary key is used to uniquely identify the records in a relation. देखो बेटा, जब भी जो है कोई आप टेबल क्रिएट करोगे, आप चाहोगे कि जो है इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उसको आसानी से उठाया जा सके, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके. अब अपडेट करोगे तो आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए ना, किस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो. तो उस रिकॉर्ड की पहचान, द आइडेंटिटी, द identification of those record is done based on the primary key. Right? जैसे इंसानों की पहचान होती है, इंसान की पहचान के लिए उसका नियम होता है. तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी शनाख्त के लिए हमारे पास प्राइमरी की होनी चाहिए. So we have a student table. Let's put some record in this database, in this relation, in this table. Student ID, student name, student age, address. Right? What I have done, I simply selected the table. I selected the table and then I click on edit. And then I insert some records here. Right, students? So this is my database. I have created a database with one relation only, student
Now let's move to Visual Studio. Now using Visual Studio, we will be connecting to the database. Let's create a new project. Right, students? So this is the structure of a simple project, a console-based application. Here we have some files on the left, application.config file. In this file, we will be specifying कि हम अपने database से connect कैसे होंगे. We need to provide different information such as कि आपका database कहाँ पड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका username, password क्या है, and so on. So we need to provide those information. So I'm providing the app settings. I have provided that my database provider. Whenever you are connecting to a database, तो आपको जो है प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए. वो एक्चुअली ड्राइवर्स प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं. और तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर दिया है system.data.sql client. ये प्रोवाइडेड है आपके पास .NET के अंदर. इसको इस्तेमाल करते हुए आप SQL सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं. You specify the connection string. This information is provided through keys. आप जो है अपनी एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर कीज डालेंगे जिसके थ्रू आप बताओगे कि ये मेरी की है और इसकी वैल्यू ये है. मिसाल के तौर पर प्रोवाइडर है. अब मैं अपने कोड से जो है इसको फैच कर सकता हूँ कि प्रोवाइडर कौन सा दिया हुआ है मैंने. फिर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है. आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं. राइट. तो वी हैव कनेक्शन स्ट्रिंग. कनेक्शन स्ट्रिंग में this connection string is usually the same format. What you actually do is आप डेटा सोर्स चेंज करते हो नॉर्मली यहाँ पे एंड डेटाबेस नेम को चेंज करते हो. तो हेयर हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या है वो इनिशियल कैटलॉग के अंदर स्पेसिफाई करोगे. डेटा सोर्स के अंदर आप सोर्स बताओगे. डेटा सोर्स आप कैसे उठा सकते हो. राइट क्लिक ऑन द टॉप नोड. This is the data source name. What I have done is actually I clicked on the topmost node of the tree and then I selected the name and copy it. So this is the name of my data source. What is the name of my initial catalog? Initial catalog means my database, which is school. So this information is provided in the app.config. App.config के अंदर अगर आप ये information डाल देंगे, then we can fetch it using the code. कोड के अंदर जाके अब हम ये information
उठा सकते हैं। नाउ लेट्स वर्क ऑन द कनेक्टेड लेयर। And by using the connected layer, we can connect to the database. Let me repeat what I have told you. First, I have created a new database. मैंने क्या किया, databases के ऊपर जाके right click किया, new database किया, and here I specified के database का नाम क्या होगा, ठीक है। Then I created a new